Dear boys and girls, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today I have to deliver my lecture number 102. हम 5वां चैप्टर कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज हमें एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 करना है और हमारा आज ये लेक्चर नंबर 102 है। इट इज आवर लेक्चर नंबर 102। तो क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ, A contractor on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows. Would it be 200 for the first day? Would it be 250 for the second day? Would it be 300 for the third day, etc.? The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he delayed the work by 30 days? एक कॉन्ट्रैक्टर को एक काम दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट पर, तो उसने जो उसका स्पेसिफिक टाइम था उसमें उसे डिले कर दिया। जिस वक्फे के अंदर, जिस टाइम के अंदर उसको ये काम पूरा करना था, तो उससे डिले हो गया। जब उससे डिले हो गया तो उस पर पेनल्टी चढ़ाई गई। कैसे? पहले दिन की पेनल्टी उसको 200 रुपया चढ़ाया गया। पहले दिन की पेनल्टी उसको 200 रुपये चढ़ाई गई, दूसरे दिन 250 रुपया, तीसरे दिन 300 रुपया, चौथे दिन 350 रुपया। इसी तरह हर एक दिन में उसको 50-50 रुपया बढ़ाया गया है एज पेनल्टी। पहले दिन से शुरू, पहले दिन में 200 रुपये पेनल्टी के तौर पर उसको अदा करना पड़ा, फिर दूसरे दिन 200 और प्लस 50 रुपया, 250 रुपया, फिर तीसरे दिन 250 और प्लस 50 रुपया, 300 रुपया देना पड़ा पेनल्टी। तो उसको इस काम में कुल डिले हो गया कितने दिन? उसको 30 दिन का डिले हो गया। 30 दिन का डिले हो गया, 1 महीना हो गया उसको इस काम में डिले। इसलिए हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। इसलिए हमें ये बताना है कि कॉन्ट्रैक्टर को कितना पेनल्टी देना पड़ा, कितने दिनों का? 30 दिन का कितने पेनल्टी देना पड़ा। तो ये हम इस तरह से करेंगे। जिस क्वेश्चन नंबर 15, तो हम ऐसा करेंगे, देखिएगा, पेनल्टी फॉर द फर्स्ट डे, पेनल्टी फॉर द फर्स्ट डे is rupees 200. Penalty for the second day rupees 250. Penalty for the third day, penalty for the third day is rupees 300. Penalty for the fourth day is rupees 350, and so on, so on. इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। Therefore, the terms becoming, or the numbers are as the terms are 200, 250, 300, 350, so on, so on, which is an AP। तो जो हमारे पास ये डाटा बन गया, 200 रुपये पहले दिन का, पहले दिन की पेनल्टी 200 रुपये है, दूसरे दिन की पेनल्टी 250, तीसरे दिन की पेनल्टी 300, चौथे दिन की पेनल्टी 350,
5 दिन की पेनल्टी 400, इसी तरह से। तो ये डाटा जो है ये तो AP बन गया। सो हियर it is first term, that is A equal 200, A means the first term. Then common difference D is equal to second term 250 minus first term minus 200, which is equal to 50. Common difference is 50. Then N, number of days is 30. N हमारे पास है 30, and we have, हमें क्या निकालना है? We have to find SN, that means S30. यानी 30 दिन की पेनल्टी हमें निकालनी है। 30 दिन में कितनी पेनल्टी उसको अदा करना पड़ेगा? Since we know that Sn is equal to n divided by 2 into 2a plus n minus 1 into d. That is, here Sn is equal to S30 is equal to n by 2, 30 divided by 2 into 2a, 2 into 200 plus n minus 1, 30 minus 1 into d is equal to 50. Or S30 is equal to 15 into 2 is 2, 2 is 2, तो एक बचता है 1, 2, 5 is 10. 15 into 200 into 2, 400 plus 30 minus 1, 29 into 50, which is equal to 15 into 400 plus 29 और 50 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 0, 5, 9 is 45, 4 carry and 5 2 are 10, 10 plus 4 is 14, 10 plus 4 14, 15 into 400 plus 1450, 1850, which is equal to 15 0 0, 15 5 is 75, 5 carry on, 15 8 is 120, 120 and 7, 127, 12 carry on, 51 is 15 plus 12, 27. So S is equal to 27,750. Hence, the contractor, after 30 days, the contractor has to pay rupees 27,750 as penalty in total. तो 30 दिन के बाद इस कंट्रैक्टर को कितना देना पड़ेगा पेनल्टी? 27,750 रुपया उसको कुल पेनल्टी के तौर पर अदा करना पड़ेगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15. नाउ वी हैव हियर क्वेश्चन नंबर 16. Question number 16 is, a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. एक स्कूल के साथ बच्चों ने एकेडमिक परफॉर्मेंस में अच्छी कारकर्दगी यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस में उनको जो कामयाबी मिली, अच्छी कामयाबी मिली, तो 7 बच्चों ने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। तो इन 7 बच्चों में हमें 700 रुपया इनाम के तौर पर देना है। सपोज हमने 7 पोजीशन निकाली, चलो पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन, 5वीं पोजीशन, इसमें 7 पोजीशन निकाले। इन्हें 7 बच्चों में हमें कुल बांटना है 700 रुपया एज प्राइज।
if each price is rupees 20 less than its preceding price, اگر ہر ایک پرائز پہلے والے پرائز سے 20 روپیہ کم ہے, فائنڈ دی ویلیو آف ایچ آف دی پرائزز, تو ہمیں ہر ایک پرائز نکالنا ہے کہ ہر ایک پرائز کتنے کا ہے, ہر ایک پرائز کا ویلیو کتنا ہے. سپوز اگر پہلے والے بچے نے 100 روپیہ پرائز حاصل کیا, پہلے جس نے پہلی پوزیشن لائی, سپوز اس نے 100 روپیہ پرائز حاصل کیا, تو دوسرا بچہ کتنا حاصل کرے گا, تو دوسرے بچے کو کتنا ملے گا, دوسرے بچے کو ملے گا 100 مائنس 20, 100 روپیہ مائنس 20, 100 مائنس 20, یعنی 100 میں سے ہمیں جو ہمیں پہلا پرائز ہے اس میں ہمیں 20 روپیہ کم کرنا ہے, تو دوسرے بچوں کو کتنا ملے گا, 80 روپیہ. پھر تیسرے بچے کو جو دوسرے کو ملا اس میں سے 20 روپیہ کم کرنا ہے, یعنی 80 میں سے ہمیں 20 روپیہ کم کرنا, تیسرے بچے کو 60 روپیہ ملے گا. اسی طرح سے ہمیں ساتھوں کا نکالنا ہے. تو پہلے بچوں ہم پہلے اس کو رب آؤٹ کریں گے. کوشچن نمبر 15 کو we will rub out question number 15 first, and then we will solve question number 16. Boys and girls, question number 16. Solution. Let the first prize be of rupees X. Therefore, the second prize be of rupees X minus 20. The third prize be of rupees X minus 20, X minus 40, and so on. اسی طرح سے the fourth prize be of rupees X minus 60, fifth prize be of rupees X minus 80, and so on. Therefore, the data is as X minus 20, X minus 40, or we can say it is better than this. It is better to write here. Therefore, the prizes are as, the first prize is of rupees X, second prize is X minus 20, third prize is X minus 40, fourth prize is X minus 60, and so on. اسی طرح سے which is ہے, تو یہ جو بنتا ہے which is an AP, which forms an AP, So here A, that means the first term is equal to X. D, which is called common difference, is equal to second term X minus 20 minus first term minus X, which implies X minus 20 minus X plus X minus X cancel is equal to minus 20. This is second term. This is common difference. First term is X, A is X, common difference is equal to minus 20. And there are how many students? Here n is equal to 7. Total prices are 7. And total amount kitna hai? Sn, that means S7 is equal to 700 rupees. सात प्राइज इनका टोटल कितना बनता है? टोटल रकम ये 700 रुपया. 700 रुपया हमें बांटना है 7 बच्चों में. As we know that Sn
is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So here Sn is equal to S7 is equal to n by 2, 7 divided by 2 into 2a, 2 into 2 into x plus n minus 1, 7 minus 1 into d, which is equal to minus 20. और S7 हमारे पास दिया हुआ है, S7 equal to 700 is equal to 7 divided by 2 into 2x plus 7 minus 1, 6 into minus 20. 700 into 2, this 2, which is denominator of 7 here, is equal to 7 into 2x plus minus minus. This is multiplication here, plus or minus. 6 0 0, 6 2s are 12, which implies 1400 divided by this 7 is equal to 2x minus 120, which implies 2x minus 120 is equal to 7 2s are 14, 7 0 7 0 0, 200. That is twice x is equal to 200 plus 120 by transposition, which means that 2x is equal to 320, 200 plus 120, 320. That is x is equal to 320 divided by 2. Thus x is equal to 2 1s are 2, 1 बचता है 2 6 are 12, 0, 160. Hence the first prize, which we denoted by x, hence the first prize is of rupees 160. The second prize is of rupees x minus 20. 160 minus 20 is equal to 140. The third prize is of rupees 140 minus 20 is equal to 120. The fourth prize is of rupees 120 minus 20 is equal to 100. The fifth prize is of rupees 100 minus 20, which is equal to 80. The sixth prize is of rupees 80 minus 20, which is equal to 60. And the last, that is seventh prize is of rupees 60 minus 20 is equal to 40. These are the prizes. First prize is of 160, second prize is of rupees 120, third prize is 120. First prize is 160, second prize is 140, third prize is 120, fifth prize is 100, sixth prize is 2, 3, 4, 5, 6, 7. First prize is of 160, second prize is 140, third prize is 120, fourth prize 100, fifth prize 80, sixth prize 60,
and 7 price of rupees 40. The total amount is here for 700. So, and this is the solution of question number 16.